Hello, Namaskar. Welcome to the first edition of Coach Conversations with Saurav Sen. आज का ये एपिसोड हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिला जुला कर करेंगे। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारे हमारे मित्र जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया में काम करते हैं, उन सब को पैसे कमाने की चाह तो है, लेकिन कैसे कमाना है इसको जानने की चाह वो भी है। लेकिन उस जानने के लिए जितनी इनिशिएटिव लेनी चाहिए शायद वो ले नहीं पाते हैं, ये सोच के कि क्या पता मैं कर पाऊँ, क्या पता मैं नहीं कर पाऊँ, क्या पता मैं उतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाऊँ। तो इसीलिए आज का सेशन आई एम गोइंग टू स्प्लिट बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन and put things into perspective so that you understand where the real bottlenecks are and where the real challenges lie. This is going to be a bit of a longish video, so I'm sure you will bear with me. But trust me, this video is for you. This video is for every possible Indian who aspires to earn a passive income. अपने रोज़गार का जो साधन आप लोगों के पास आपके सैलरी के ज़रिए आता है हर महीने के अंत पे, और उस सैलरी पे जब भी कोई तनाव पैदा होता है कि भाई नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, संस्था बंद होगी नहीं बंद होगी, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस तनाव से आपकी ज़िंदगी की आधी खुशियाँ तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो ये वाले वीडियो को ज़रा गौर से सुनिए, देखिए, समझिए, उसके बाद अपने भविष्य का रास्ता चुनने का पूरा अधिकार आपको है। सो फर्स्ट लेट मी रिमूव अ मिथ। लोगों के मन में एक विचार है कि भाई इंटरनेट से पैसे कमाना ये ज़रूर कोई 420 वाली बात है, वरना कोई इतने पैसे थोड़ी कमा सकता है। मेरे एक बड़े काबिल दोस्त ने तो इतना कह दिया कि नाइजीरिया जाना पड़े तो वो भी जाऊंगा अगर इतने पैसे कमा सकूं तो। अब क्या करें, अंधविश्वास और अज्ञानता दोनों का कोई इलाज तो होता नहीं है। But because it is not a crime to not know, because it is not a crime to not be aware, I have taken this initiative to make you all aware कि भाई ये इंटरनेट से पैसे कमाना ये है क्या चीज़, ये जानवर कैसा दिखता है, कहाँ मिलता है, उसको पालने के लिए कितना उसको खिलाना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है। My intention is that whatever I have learned about the internet over the last 28 or 29 years, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब हम सब लोग मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करना सीख गए हैं। हम सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे टाइम बिताते हैं, लेकिन जिस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे हम इतना टाइम बिताते हैं, हम उसी से दोस्ती कर लेते हैं। उसके बिना हमारी ज़िंदगी वीरान लगने लगती है। हिंदी में एक कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आप इंटरनेट से दोस्ती करोगे या खाओगे। अगर आपको दोस्ती करनी है तो आप टाइम पास जारी रखिए, फेसबुकिंग करते रहिए, इंस्टाग्रामिंग करते रहिए, यूट्यूब में 2-4 वीडियो बना के लगाते रहिए। अगर उससे सुकून मिल गई, शांति मिल गई तो मुबारक हो, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है इंटरनेट से, सो आपको वही फेसबुक, वही इंस्टाग्राम, वही यूट्यूब, इनको थोड़ा अलग ढंग से अप्रोच करना पड़ेगा। अब आते हैं छोटी सी बात पे, भाई ये
ये जो अर्निंग ऑनलाइन वाला जो फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? नो, it is not a product where you will buy a product, you are going to push a button and your income is going to start. No, it is not a get rich quick scheme. It is just as much hard work, it is just as much dedication, it is just as much commitment as you would put in if you were to set up a bakery in your neighborhood, or if you were to set up a potato chips business in your city. कोई फर्क नहीं है. बिजनेस तो बिजनेस होता है, व्यापार होता है. आपकी आमदनी अगर आपके खर्चे से ज़्यादा हुई तो उसको मुनाफा कहते हैं. But what I am going to teach you is how to literally minimize your expenditures so that whatever you earn will almost be 100% profit. ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, थोड़ा इत्मीनान रखिए. Just stay patient. You see, the problem is that everything is clinical, everything is measurable. मैं हमेशा लोगों को ये कहा करता हूँ कि इंटरनेट एक ऐसा अजूबा है जिसको ना तो प्रशंसा की कोई अपेक्षा है ना निंदा की. अगर आपको इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना है तो वहां आपको अच्छा लगा या बुरा लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It will all be measurable. So all that needs to be taught if you want to earn money online is that you have to literally take out what you like and dislike and throw it into the dustbin, and you have to start relying on numbers. अगर numbers बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं अच्छा काम. अगर आपके नंबर्स बोल रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो सर सुधर जाइए, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे कहीं से. सो डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू गिव यू अ कपल ऑफ वर्ड्स ऑफ प्रेज सेइंग oh this guy is working very hard. Doesn't matter. So the only way for you to earn money is to work hard, and your hard work should show in the numbers. In the last several weeks, I have posted several pieces of content which talks about a magic number, which is $10,000 per month. $10,000 per month कितना होता है आपको आइडिया होगा? $1,000 मतलब करीब करीब 82,000 रुपये, 82,000 rupees. $10,000 मतलब करीब करीब 8.25 लाख रुपए. 8.25 लाख रुपए अगर आप महीने का बनाते हैं तो 30% के हिसाब से अगर आप इनकम टैक्स भी दे देते हैं, फिर भी आपको नेट इनकम महीने के 5.5 लाख रुपए मिल सकते हैं. अब मैंने ये 10 लाख का फिगर क्यों चुना? Why didn't I say 5? Why didn't I say 15? उसकी वजह ये है कि अगर 5 लाख यानी कि अगर 5,000 6,000 डॉलर ही कमाना है तो फिर तो बैलगाड़ी में जाना बेहतर रहेगा. लेकिन अगर आप सुपर हाईवे में ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे अगर आप बैलगाड़ी से जाएंगे तो बैलगाड़ी को ही निकाल दी जाएगी. सो आपके पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं होगा. यू हैव टू ड्राइव फास्ट इफ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे. I'm not going to get into examples at this stage in this video. I'll keep all that for later, but I can tell you for sure, and all this is available in public domain evidence, that there are people who are actually earning more than $50,000
per month. So the number is not the issue. Sky is the limit you can earn. Now let me quickly come to the myth. एक जो ये हवा है कि भाई ये ऑनलाइन इनकम ये बहुत डाइसी चीज़ है, बहुत हमें नहीं विश्वास होता कि इतने पैसे इंटरनेट से बन सकते हैं, हमें तो नौकरी करनी है। तो करिए ना, किसने मना किया आपको नौकरी करने से? आप करिए। What I only propose is get yourself a passive income. When I say passive income is continue to work for your salary during the day, but invest at least 2 hours every day, be it in the evening, be it in the night, and of course during weekends and holidays, to start building a passive income, even if it means $500. शुरू तो कीजिए। But once you start earning $500 a month, it will be proof that you know how to earn money online. And then to scale up from $500 to $5,000 will only be fine-tuning of your efforts, some amount of consistency and accountability कि आप complacent होके बोलेंगे यार आज मन नहीं कर रहा, आज कुछ नहीं करेंगे, देखा जाएगा, बस that is one poison you will have to avoid, but otherwise you will be on the path. So आज आप लोगों के सामने मैं फिर से दोहराता हूं, $10,000 per month is not impossible at all. You can earn it wherever you are, whichever part of India you are. You may be in a village, you may be in a town, you may be in a metro, you may be in a state capital. You don't have to go anywhere. All you need is a laptop or a desktop with a webcam, of course. You need a good quality internet connectivity and you need a smartphone. As long as you have these three, and as long as you have the determination and the commitment to go for it no matter what, आपके पैसे तो बनेंगे, जरूर बनेंगे. But a couple of disclaimers. Don't expect that मैंने आज काम शुरू किया तो एक हफ्ते बाद यार पैसे नहीं आ रहे. यार क्या हो गया, 1 महीना हो गया, इतना काम कर रहा हूं, कहाँ है पैसा? क्या बकवास है. You see, nature has also earmarked a 9-month period to give birth to a human being. So don't expect anything to be born in a month. It may. Nobody is denying that if you are really, really on turbo mode, and if you are really lucky, if you take the right decisions at the right time, there are so many people who start earning a trickle of revenue within the first month. But it takes time, as long as you are consistent, and I'll tell you why I'm stressing on the longer term, because the route that I teach is not something that will get you $5 and $2.5 and 50 rupees and 70 rupees. No. What I teach is known as high ticket coaching and high ticket affiliate marketing, high ticket blogging, high ticket YouTubing. The term high ticket makes it different because the tendency is that you earn in multiples of at least $500. छोटी छोटी चीजों को हम कोशिश करते हैं नजरअंदाज कर दें. मान लीजिए आपने दुकान बनाई और उस दुकान में आपने
चाइनीज़ चीज़ें रख दी जिसमें एक चीज़ की कीमत, कोई भी चीज़ हो सकती है, उस चीज़ की कीमत 50 रुपये है। 50 रुपये की चीज़ बेचकर आपको प्रॉफिट होता है 10 रुपये, चलो 20 रुपये, चलो 25 रुपये, 50%। लेकिन उस एक चीज़ को बेचने के लिए जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, जितनी आपको कस्टमर को कन्विंस करनी पड़ती है, if I tell you that you spend the same amount of effort and same number of words and same amount of time, and instead of selling something worth 50 rupees, you sell something worth 25,000 rupees, and you are going to make a profit of 10,000 rupees. Won't you be happy? So, once and for all, let me break down the myth. जिनके मन में शंका है, जिनके मन में डाउट है कि भाई ये क्या बोले जा रहे हैं, $10,000, $10,000, ये मजाक है क्या, ये कोई फिल्मी सिचुएशन है क्या? अगर लोगों को $10,000 रोजगार करने का इतना ही मौका होता तो सारी जिंदगियों में खुशहाली छा जाती और कोई दुखी तो होता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रॉब्लम 10,000 कमाने में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि आप लोग अभी तक यही नहीं तय कर पाए हैं कि क्या आप उस हद तक कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क दे पाएंगे। आपको तो लगता है भाई सैलरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कंपनी जाए भाड़ में, मेरे को मेरी सैलरी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं। यू हैव टू लर्न टू अर्न। If you learn to earn, you earn. Actually देखा जाए तो even in a salaried atmosphere, it's the same thing. If the company earns, you earn. But the problem is that ये हमारे लेगेसी का बैगेज है कि हमें इस बात की समझ थोड़ी सी कम है। खास करके जो लोग एक ही नौकरी में सालों भर नौकरी करते आए हैं, उनके मन में ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा जागता है कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है कंपनी में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, मंत्रालय में क्या हो रहा है, हमें हमारी तनख्वाह मिलती जानी चाहिए, हम जैसा भी काम करें। दैट इज़ वॉट स्पॉइल्स द माइंडसेट। और हमारे मन में लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं। व्हाट आर लिमिटिंग बिलीव्स? लिमिटिंग बिलीव्स वो चीज़ है जो आपके कान में फुसुर कर देता है कि आपसे ये सब नहीं होगा, फालतू में यहाँ मत जाओ, ये इंटरनेट आपका नहीं है। अच्छे भले नौकरी कर रहे हो, तनख्वाह मिल रही है, सुकून से रहो, फालतू में ये सब चीज़ों पे मत पड़ो। आईटी सेक्टर में जब हजारों के तादाद पे लोगों को निकाला जाता है तो उनको काम आता है वो किसी और टेक्नोलॉजी कंपनी में। सबको नहीं मिलता है, किसी को मिल जाता है। मीडिया सेक्टर में जब 100 के तादादों में लोगों को निकाला जाता है, फिर से मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है। जब नौकरियां नहीं मिलती हैं तो फिर फ्रीलांस करते हैं। फ्रीलांस में कितने पैसे बनते हैं, कितना सुकून मिलता है। और अगर पीएसयू या सरकारी इकोसिस्टम में अगर किसी की नौकरी खतरे पे आती है तो वहां तो घंटी बज जाती है। भैया 20 साल 25 साल से कुछ किया ही नहीं सरकारी काम करने के सिवा, अब नौकरी चली गई तो करेंगे क्या? अरे भाई पढ़े लिखे इंसान हैं हम सब, वी आर ऑल एजुकेटेड, वी आर ऑल एक्सपीरियंस्ड, वी आर ऑल वाइज। सबके फ़ोन में इंटरनेट है, सबके फ़ोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, सब कुछ है, यूज़ भी सब कुछ करते हैं।
Show me a person who does not use WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Right from the peon to the clerk, to the officer, to the manager, to the director, to the CEO, to the chairman, everybody uses it. So each one of them, irrespective of their rank and their salary and their seniority, can potentially earn $10,000 per month. No questions asked. उसके लिए अलग से कोई डिग्री नहीं चाहिए, अलग से कोई तजुर्बा नहीं चाहिए, अलग से कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए. समर्पण चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए. आपको एक और बात बताऊं, ये बात काफी लोगों को हैरान कर दी. 1995 में जब इंटरनेट इंडिया में आया तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इसके बारे में अपना नो कॉन्फिडेंस जताया. एक बहुत बड़े मीडिया सेक्टर के दिग्गज पत्रकार, उन्होंने हमें कहा था, Where's the money? आज शायद उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. लेकिन उसके आगे चलते हुए जो साल हमने बिताए, जहां गूगल का जन्म हुआ, फेसबुक का जन्म हुआ, माई स्पेस छोटी सी उम्र में गुजर गया, नेटस्केप गुजर गया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, फॉर्मल एजुकेशन, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमबीए, पीएचडी, 2023 में I think there's a need for us to rethink the significance of formal academic qualification. I am not belittling formal education. All I'm saying is, let's not put all the eggs in one basket, because a formal education cannot possibly guarantee you a great future. Because there is always a deficit of opportunity in the formal job sector, unless you are open to doing, within quotes, any job. So you might be an MSc in physics, you might be driving a taxi. You might be a literature gold medalist, and you might be working as a clerk in some organization. You might be an MPhil in botany, and you might be an administration manager in some private sector company. Does it really justify all the effort and hard work that you did in your formal education sector, studying in illustrious colleges and universities and institutions? No, I'm not belittling it. I'm also proud of every school and college I've studied in. They are all in their respective places. So that's one. Second, professional pedigree. I can tell you for sure, just as a matter of, call it coincidence, call it accident, I've been lucky enough, and God has been kind enough, that in the 34, 35 years of my professional life, I have never ever worked for a B grade organization. So I can proudly declare that I have only worked for A grade organizations. Great. I humbly bow to every organization that I've worked for. The gray hair gives me wisdom and humility as well. But the gray hair and the seniority and the designation and the experience is worth zero when it comes to reskilling and upskilling yourself in the age of the internet. If you really want to earn yourself and your family financial freedom, time freedom, and location freedom. Now let me paint a picture in front of you. You earn 1 lakh per month. Your family is tuned into that salary because you've been working for the last, 10 years, 15 years, 20 years. Your family's expenses are all tuned in
to the 1 lakh rupees salary that you take home, which increases at the rate of 6%, 7%, 8% on an average, or 10%, whatever. And the only thing that you take home apart from that salary is the surety that you will continue to get 1 lakh or more till you attain 58 years of age, or 60 years for certain sector. But as a trade-off, you can't take leave if you are not sanctioned. You can't go on a vacation whenever you want to. You can't buy something just because you like it unless you have the budget. So every decision is captive to the constraints of your employment. If your boss does not give you leave, you can't go. If your salary does not permit, you can't buy. If your client needs you, you can't leave station. Somebody in your family is unwell, you want to spend the time with him or her. Sorry, too many important meetings, I have to leave home. 40 hours every week by the clock and by the calendar, you are snatching away from your family only to earn that 1 lakh per month till you attain the age of 58, and by the time your children would have grown up and said, okay, thank you so much for not spending enough time with us. Now we have other people to spend time with. You can find your own way. Children. Old parents are on the other side of the spectrum. When they need you, you can't spend time with them because you're on duty. You're traveling on business. You have meetings. Your boss wants you. The old parents would sit and stare at the blue skies outside, waiting for their turn to come. And when their turn comes, unfortunately, all that we are left with is the regret that we couldn't spend enough time with them. So the call is something that you need to take. Do you want financial freedom? Do you want time freedom? Do you want to spend more time with your family and still not worry about your bank account not having enough money every month? 1970, 1980 did not offer any such possibility. 1990 also did not offer any such possibility. 2000 also did not. 2010 also did not. But 2023 does offer you that choice. Do you want to earn enough sitting at home, using your intellect, no gambling, no crypto, no investments in stocks and trading, all bona fide exercises of your intellect, of your expression, of your instinctive relation building with people across the world, of your basic urge to help people and get the rewards for it. So that's the basic rationale. Let me, for a moment, for the sake of your, just to kick off your thought process, I'm going to break up the $10,000 into 5 parts. 5, not 1, not 2, not 3, not 4, but 5 parts. So on an average, let's say we break up the $10,000 into $2,000. I can show you the way to earn $2,000 out of your blog. Can you write a blog? You would say, yeah, I already have a blog. Did you ever earn money from your blog? Can you earn $2,000 from your YouTube channel? Do you have a YouTube channel? I do. My wife also has one. My son has one. My daughter has one. Have you made 10 rupees out of the channel yet? No. So the effort that goes into Facebook, into YouTube, into Instagram, into LinkedIn, it's a bottomless pit. It's a bucket with a hole at the bottom.
You pour all your time, your energy, your intellect, your ideas into it, and it goes down the drain. All I'm doing is I'm plugging the bottom of the bucket for you. And you continue to do what you're already doing with some tweaks here and there. You are already on Facebook. You're already doing something on Facebook. All I'm going to do is tweak it a little bit. You're already on Instagram. I will just tweak it a little bit. You're already on blogs. I will tweak it a little bit. You're already on YouTube. I'll tweak it a little bit. And those little tweaks in the processes will make the difference. You see what is written right here? I will just press a space bar and it will become the opposite. God is nowhere. Does that make me an atheist? And one space bar makes me a believer. God is now here. Can it be any easier than that? That's the whole point. All I want you to do is to start with the belief that if you want to earn more money using your intellect, by doing a lot of hard work that is clinically measurable, you get the benefit of being wherever. You can work out of your bedroom, you can work out of your living room, you can work out of your garage, you can work out of the airport, you can work out of the railway station, you can work out of a garden. All that you need to do is get yourself skilled. Why do you send your children to B school and engineering college and medical college? Because you invest in their future. Why can't we just buy a few books and tell our children to just read those books and they can know all about business? After all, every course has a syllabus, has a curriculum. The curriculum has books. So just buy the books, read the books, and you will become knowledgeable enough. Does that happen? No, it doesn't. Is there a difference between a correspondence course and regular schooling? Yes. What's the difference? The difference is mentorship. The books don't matter unless you have a mentor to guide you. The YouTube videos are there by the kilo. You can go and consume as many as you wish. But unless you get yourself a mentor, you will not be able to zero in on your destination. I'm not saying it's impossible. It is possible. But unless you know what to keep and what to throw, you will be taking a very circuitous route to success. If you want to do that, all the best, you can do that. It's technically not impossible. But the world over, especially in the West, where coaching and online income is a much, much bigger trend, it's time for we Indians to prove that this nation of 1.4 billion people has enough brains, has enough talent, and enough thirst to hop, skip, and jump over traditional education and make themselves successful financially, intellectually, professionally. Hope you like this webinar. If you want to know more, you can click on this link and set up an appointment, and we can discuss your ambition, your aspirations in greater detail so that I can suggest the way forward for you. Thank you so much for hearing me out.